Hello everyone and welcome to CreativeFrndz. Computer graphics is of two types, vector graphics and raster graphics. Vector graphics are resolution independent, that is, they can be scaled to any size and printed at any resolution without losing detail or clarity. As a result, vector graphics are the best choice for representing graphics that must retain crisp lines when scaled to various sizes, for example logos. A program such as Adobe Illustrator and CorelDRAW are the ones that creates vector graphics, which is also known as ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्ट। वेक्टर ग्राफिक्स रिजोल्यूशन फ्री होते हैं, हम इसको किसी भी साइज में स्केल कर सकते हैं, यानी इसका साइज हम चेंज कर सकते हैं और इसको किसी भी रिजोल्यूशन पे प्रिंट किया जा सकता है। रेस्टर ग्राफिक्स। Raster images, also called as bitmap graphics, are made up of small squares called picture cells or pixels to represent images. The quality of a raster image is determined by the total number of pixels, called its resolution, and the amount of information in each pixel, often called color depth. Raster graphics cannot be scaled, resized up. An image is rasterized, its quality is fixed and cannot improve even on better display devices. Programs such as Photoshop and MS Paint are the ones that creates the raster or bitmap images. Raster graphics को हम bitmap graphics भी कहते हैं। ये छोटे छोटे स्क्वायर्स से मिल करके बना हुआ है, जिसे हम पिक्चर सेल्स या पिक्सेल्स कहते हैं। रेस्टर इमेज की क्वालिटी फिक्स होती है इसके रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। रेस्टर ग्राफिक्स को हम अलग अलग साइज पे चेंज नहीं कर सकते, रीसाइज नहीं कर सकते, इसकी क्वालिटी फिक्स हो जाती है। एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से हम बिटमैप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं।